Hey, good morning. Yes, solutions is the plan and Wu-Tang Clan, Wu-Shang Clan, जो भी आपका नाम है जो आप बोल रहे थे. What's up? Hello. As you can see, the name of the chapter is literally name of the session is JEE Main 2024 Jan Attempt Crash Course. I hope that answers your question. How's it going? How's it going? क्या चल रहा है? Have you guys had some time to maybe prepare for this? Yeah, थोड़ा बहुत सवाल solve किए हैं. How you feeling about this? Good morning, Yuvraj, Wushang, Ghost Soldier, and Life Motivations. All right. Wow, bhari bhari naam, huh? So where are we at in all of this? This as always, ये आपको मिलेगा. Yeah, in the links. As soon as session gets done, you'll get the Telegram pay PDF of this session. All these links are clickable. Yeah, if you click on solutions, it goes to solutions, etc., etc. Playlists, सब चीजें यहाँ पे हैं. Where are you guys at right now? Here, right here. हम लोग यहाँ पे हैं. We have done 3. Whoa, look at how blurry I got. Hold on, let me fix that real quick. Deactivate and activate. Yeah. What's up? All cool? Okay, sweet. So yeah, we are here. We've done stoichiometry. We have done atomic structure at electrochemistry. So PYQ wala session. Let me write that explicitly. That's not a part of this. But anyway, yeah, that's what we're at. So as always, we'll quickly go over NCERT. Thoda time लाएंगे, and then we'll solve some good questions. Okay. And as always, feel free to ping whatever doubts you have, if any, in this chapter. Now, solutions का main चीज you need is mole concept, which I did that first, right? बाकी तो theory is doable. Maybe थोड़ा सा gaseous state चाहिए. Oh, states of matter हटा दिया syllabus से? नहीं, कुछ नहीं हटा है. KTG में है ना पूरा states of matter, whatever has been allegedly removed. It's all there in kinetic theory of gases in physics. Okay, so let me open up the NCERT textbook. That's what I've been doing of late, right? सीधे NCERT को दिखा के हम लोग काम करते हैं. Wait, NCERT भाई साहब कहाँ गए? अरे, hold on. Edge. There you go. Here it is, right? Okay. So, hey, Hare Krishna, Arya, Warrior, what's up? So, have you guys been reading the NCERT? This is probably like the 100th time I'm telling you guys, please read the NCERT. It'll make your life easy. Yeah, for sure. Khair, where are we at? So, the first part of NCERT, which is all of this, mass percentage, volume percentage, molarity, molality, mole fraction, ये सब मैं already cover कर चुका हूँ in mole concept and stoichiometry, right? I've done some PYQ session on that. I'll leave links in the description if you want. You can find it on the playlist, ठीक है? And also we did a mole concept crash course session just a couple of days back, just last week. तो PYQ में वो सब है, आप उसको देख लेना, ठीक है? The focus of this session is going to be talking about, sure, molality will be used. This will be used in the things that we in some questions. Yeah, most questions will have molality, but basics हम लोग already कर चुके हैं. तो where do we start? This theory, yeah, कि भाई अगर मैं किसी चीज को किसी चीज में मिक्स करता हूं, specifically liquid, yeah, then what is the idea of saturation? What is delta H solution? What is delta H solution? Positive हो सकता है, negative हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. And what is the effect of pressure? So when you have a liquid solution, there is no effect of pressure. Now I'm going into theory and I'm just marked some parts that I feel are really important, जिससे हमेशा सवाल आते हैं, whether it's JEE, JEE Main, JEE Advanced, or even in NEET. Okay. So the first thing that I feel is really important is this whole concept of Henry's law. Okay. This says that this talks about how much gas you can dissolve in a liquid. Okay. Gas in liquid. And for different gases, ये जो K की value है वो बदल जाती है. That's all. Okay. And usually this is the expression P equal to KH times X. The unit of KH is going to be bar because X is mole fraction of that gas itself. अगर ये idea आपको foreign लग रहा है, you really need to read the NCERT. I know you'd like to watch some videos and take a shortcut, but मेरा solution है कि please read the NCERT. One interesting thing is that this is another form of the equation. This right here, okay, P into KH times X. NCERT में नहीं होता है, but कभी-कभी JEE में ऐसा form भी आ चुका है. Now, how do you know which is the form of the equation? Check the units of KH. अगर KH की unit है bar, then you're talking about equation number 1. अगर KH की unit है bar inverse, then this is the other equation. Is just y equal to mx or y equal to 1 by m times x. That's it. Okay. That's all it is. आप देख लो उसको कैसे figure out करना है. थोड़ी सी बारीकी वाली बात है. Let me quickly look at the chat here. Golu, what's up? What's up? Hare Krishna. Human, आपके पास old NCERT PDF है? Human, Google कर लो यार. That's what I've opened up. Colligative properties, Van der factor. Yes, Yuvraj, we're going to do all of that. Good morning, Shankar. Oswald Walker method भी होगा आज colligative properties में. Who are Oswald and Walker? I'm just kidding, man. What is it that you want to cover? Let me know. We'll figure it out. Sudarshan, kaun hai re baba? Sudarshan is somebody who retracted the message. I didn't see what the person said, but please be respectful. That's all I ask for. Time pass thoda bahut chalta hai, but please be respectful. Whether it's a real class in real life, IRL, or online, please
बी रिस्पेक्टफुल, ओके, ठीक है। सो और क्या क्या चीजें आपको करनी है, व्हाट हैपेंस टू टेम्परेचर, सिंपल द आइडिया है, या अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इन एरेटेड ड्रिंक, या वो ठंडा होता है, उसमें बहुत फेज होती है, और द कार्बन इट गोज फ्लैट, राइट, मतलब वो CO2 निकल जाता है बिकॉज टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो सो व्हिच मींस इंक्रीज इन टेम्परेचर गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होती है, सिंपल स्टफ। बट प्लीज रीड दिस थियरी, एवरीथिंग हियर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थियरी, बिकॉज जेईई में काफी हद तक थियरी भी पूछने लगे हैं, लेकिन 4 ऑप्शंस पूछेंगे, अच्छा इनमें से 4 कितने करेंट, तो चारों थियरी में यू हैव टू रीड थियरी। Now, this is the most concept heavy part from now on. The ideal solution of two volatile liquids. Liquids हमेशा volatile ही होते हैं. Non-volatile होता है solid जब आप mix करते हो. We'll talk about that in the next part of this thing itself in about couple of minutes. That is colligative properties that a few of your friends are pointing out. Now, this idea of ideal solutions is two liquids that are volatile. Okay, and they follow Raoult's law and Dalton's law of partial pressures. देखो, इफ दे आर वॉलेटाइल मतलब कि थोड़ा सा जो भी लिक्विड है, पानी है, व्हाटएवर लिक्विड गोज इनटू वेपर फेज। नाउ व्हाट इज द प्रेशर, द वेपर प्रेशर ओवर देयर, एंड व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, दीज आर टू आइडियाज दैट यू हैव। इन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं, यू गेट अ कपल ऑफ एक्सप्रेशंस। दिस राइट हियर इज राउल्ट्स लॉ, ओके, I'm going to write an R over here, and this right here is what are we doing here, हम लोग figure out कर रहे हैं Dalton's law of partial pressure using this, okay. So you get a couple of expressions, couple of equations, very doable. Overall आपको ये ग्राफ मिलता है where you're plotting vapor pressure versus mole fraction. Okay. Less volatile component वो है जिसका P naught कम है, more volatile ये है। अब अगर volatile ज्यादा है मतलब उसका जो है T2 is going to be lower than T1. What is T2 and T1? These are boiling points of these liquids. Some basics. Okay. Shankar just now at 11:30. Yeah. ऑर्गेनिक भी होगा गोलू, ऑफ कोर्स। हे बाबा जी, एनसीईआरटी बोरिंग लगता है, बस मार्क्स एनसीईआरटी से आते हैं। और क्या आपको एक्साइटिंग लगता है? मे बी यू लाइक वीडियोस, बट यू गॉट टू रीड बुक्स। हाउ आर यू गोइंग टू फिगर आउट कॉलेज विदाउट रीडिंग बुक्स? दिस इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। एंड बोरिंग लगता है तो क्या हुआ, मार्क्स आ रहे हैं तो कर लो, दैट्स अ फोकस, राइट? सॉल्व दीज गाइज प्लीज, सॉल्व ऑल ऑफ दीज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। देयर आर क्वाइट हाई चांसेस कि डायरेक्टली इससे चीजें आ जाएं जेईई में। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, JEE advanced में आने के chances कम है directly, but you need NCERT either way. Okay, that's why instead of giving you fancy slides, you've seen a lot of fancy slides from Byju's. We've done that. You can check those out. But अभी because आप लोग NCERT नहीं पढ़ते हैं और जैन में है, कुछ 50 दिन बाकी है आपका एग्जाम, इसलिए मैं सोचा भाई NCERT तुम ही खुद ही पढ़ लो। तुम नहीं पढ़ोगे मैं दिखा देता हूँ। Then after this at least hopefully you'll open the book and read it. Okay. Anyway, so next idea is ideal solutions में delta H and delta V mixing 0 होता है. And literally anything that is asked in JEE main or NEET, I can pinpoint where in NCERT it is, not because मैंने ठीक से पढ़ा है, because I have a PDF and I can look it up. So please आप भी यही करिए, पढ़िए ठीक से। अगर आपके पास physical book नहीं है for whatever reason, get a PDF, study. Okay. This idea of when you have non-volatile, when you have volatile liquids mixing, it's almost always a non-ideal solution. मतलब कि थोड़ा बहुत बदलाव तो हो जाता है, थोड़ा वॉल्यूम बदल जाता है, थोड़ा डेल्टा H बदल जाता है, it's not equal to always 0. So if there is a positive deviation मतलब क्या? I'll look, put it on a nice slide also. But positive deviation मतलब कि the temperature is falling, the interactions between AB are lower than interactions between AA and BB. कैसे मैं confidently बोल सकता हूं? Because इसका pressure बढ़ गया, pressure is more than expected. So the temperature at which it boils is going to be lower than expected. They are opposite ideas. तो ये purple line is temperature and the blue stuff is pressure. उल्टा है यहाँ पे, when you have what you have here, this is going to be a high boiling point mixture, this is going to be a low boiling point mixture. Any doubts so far? Are we good? PCM में सिर्फ केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है, उसमें भी लोगों को बोरिंग लगता है। आई फील फिजिक्स भी पढ़नी है, क्यों नहीं पढ़नी है? मैथ्स भी पढ़ो सब पढ़ो भाई एनसीईआरटी। इट्स नॉट लाइक एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है दोस्त। ऑल्दो मैथ्स से मे बी डायरेक्टली एनसीईआरटी नहीं आती, आई डोंट नो अबाउट मैथ्स, आई एम श्योर फिजिक्स से आती है बॉस। आई नो, I was able to solve physics paper, boss. I was able to do 7-8 questions of physics from 2023 just because I did chemistry. So कोई rocket science नहीं है, ठीक है? आप लोग एनसीईआरटी पढ़ो, you'll be good for most subjects. Sure, you've got to do stuff over and above NCERT, but bare minimum is NCERT. पहले तो वो करना है आपको, okay? In all subjects. People say NCERT is not enough. Okay, but have you done NCERT? That's the foundation of everything. Sure, you may find other resources to study things in a better way, in a nicer way. But NCERT तो पढ़ लो. The JEE main exam is based off NCERT. Make sure you do that. That's the bare minimum thing. खैर, anyway, इसी का idea,
जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, एक्सट्रीम केसेस का ये है कि उनका जो है वेपर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दे हैव दिस फॉर्म दिस मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग मतलब कि सबसे कम टी एंड सबसे ज्यादा पी, इसलिए मैंने बोला कि जो है आइडियल से बहुत ज्यादा अलग है ये। ओके, एंड सिमिलरली यू हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। नाउ दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, ओके, फ्रॉम व्हाट वाज हियर। हम लोग यहां पे बोल रहे थे कि ये यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज द होल थिंग वेयर यू हैव अ पॉजिटिव डिविएशन, इसको बोलते हैं, राइट? पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन अगर बहुत एक्सट्रीम हो गया, लेट मी राइट दैट हियर अगेन, पॉजिटिव डिविएशन दैट फॉर्म्स अ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। नेगेटिव डिविएशन अगर बहुत ज्यादा हो गया, दैट फॉर्म्स अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एग्जांपल्स यहां पे मैंने कुछ लिख दिया, अल्कोहल वाटर, HNO3 एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑन टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, विल जस्ट टेक कपल ऑफ मिनट्स टू लुक एट दिस बिकॉज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इज एक्चुअली इजियर देन ऑल ऑफ दैट, क्योंकि चार चीजें हैं। देखो, अगर मैं नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल रहा हूं, इफ आई पुट नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट, ज्यादातर पानी में ही होता है, बट अगर JEE एडवांस में बोल देंगे नहीं चलो ठीक है, you put it in CCl4 or something like that, it will change the solvent, उसका बस KB और KB और KF बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है? It's no big deal. Four things happen. One is actually it's the same thing happens, उसके there are four different ways of looking at it. Okay, what is happening? The vapor pressure reduces. There is a reduction in vapor pressure. मतलब कि जो पानी था, solvent था, it would easily go into vapor, but because I put solids in it, non-volatile solids in it, वो पानी की बाउंड्री बढ़ गई है। मतलब water stays water for a longer, for not a duration, but for a broader temperature range। मतलब कि उसकी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से भी थोड़ा ऊपर हो जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस से भी थोड़ा कम हो जाता है। So there is an expansion of the boundary, the phase boundary of water. So there is an elevation in boiling point and a depression in freezing point. दोनों तरफ बाउंड्री थोड़ी सी बढ़ जाती है, any solvent, okay? And that's what these two equations are saying, and that is a direct consequence of this delta P equal to I times X times P naught, where X is mole fraction. I have Andra factor, वो सब कर लेंगे, don't worry. Last point is pi equal to ICRT. Yeah, what is pi equal to ICRT? Osmotic pressure. एक semi-permeable membrane लो, okay? Just listen to my voice, don't have to look at anything. Semi-permeable membrane लो, on one side you got a solution, other side you got pure solvent. Now here solute particles cannot go, only solvent particles can go. So solvent particles go through, and there is a bit of a pressure that is developed because of that, and that is called osmotic pressure. If I apply osmotic pressure on the solute, on the pure solvent side, then I can prevent this movement from happening. That is what is osmotic pressure. ये concept आपको समझना चाहिए. It's not something to mug. So I don't remember this. I have formed this picture while I was talking कि ठीक है ये होता है, and I was able to just put it across in words. But you will get this, you will get the hang of this once you read NCERT properly. Khair, that was all you need to do qualitative properties. And I've written in big words, do not need to mug this. इसको कुछ नहीं mug करना है आपको, you will derive it. That is the whole point of this. You will not mug unnecessary things, you will derive these short things. और ये ग्राफ बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको I'll show this you after we finish this. ये you may have to mug, okay? May have to mug this. इसका derivation is a little bit complicated. If you can derive it, please do. But may have to mug this one. ठीक है? And I'll talk about this also, don't worry, in just a minute. So, yeah, that's pretty much all I wanted to chat about here. I've already spoken about all of these things, osmotic pressure, etc., etc. वो एक ग्राफ हम एक बार देखेंगे, then let's start with some questions. I क्या है? I का एक definition याद करो, again, don't mug 100 definitions. It's actual number of particles by expected number of particles. Why? Because colligative properties depend on number of solute particles. So, ये abnormal mass by normal mass क्या होता है, किसको याद है? No one cares. Figure out the number of particles. देखो, अगर mass बढ़ रहा है, अगर associate हो रहा है, which means number of particles कम हो रहे हैं. Focus on that, and then you will know कि whether किसको numerator में किसको denominator में डालना. You will figure that out. Main thing is actual what you have right now, then what is expected. ठीक है? Remember I to be that. You don't have to mug all these weird equations. All right, शुरू किया काम, जाए काम. What's up? रिलेटिव लोअरिंग में है ऑसवाल्ड वॉकर प्रोसेस. ओके, एनसीईआरटी ही भगवान है? नहीं, भगवान तो श्री कृष्ण है. भगवान तो बहुत होते हैं, भगवान बहुत नाम होते हैं. एनसीईआरटी भगवान नहीं है, कुछ नहीं है. एनसीईआरटी इज अ बुक दैट यू नीड टू क्रैक जेईई. ठीक है? ऑल राइट, लेट्स गो बैक टू आवर अमेजिंग नाइस पीपीटी presentation. Here you go. All right, sweet. So the graph that I wanted to talk about, this beauty right here. यहाँ पे क्या हो रहा है इस ग्राफ में? Let's dissect this graph. So green वाली line is pure water, pure solvent. Okay, I add a little bit of non-volatile solute in it. As soon as I add non-volatile solute in it, उसका vapor pressure कम हो जाता है. Remember, the boundary of water expands.
What boundary? The phase boundary. Okay, मतलब for a greater temperature range it remains as water. तो दोनों तरफ देखो boundary expand हो रही है. What do I mean? Now say somewhere over here is 1 atmosphere. When vapor pressure is equal to 1 atmosphere, boiling happens. देखो ये boundary हो गई expand. या ठीक है, यहाँ पे specifically दिया हुआ है this to be 1 atmosphere, so we'll take it to be this. Okay, this boundary expanded over here. Similarly, यहाँ पे भी boundary expand हो गई है. So this was the original boundary and this is the new boundary. बस that's it. ठीक है? That's what you need to get away from this graph. And importantly, this is very funky. This is only with water कि इसका phase diagram ये coefficient negative है. Normally, if you see for CO2 and all that, the phase diagram ऐसा होता है. ठीक है? This line का slope is negative. This is a little bit extra and JEE advanced के लिए काम में आएगा. ये वाला ग्राफ इस स्लोप का होगा. All slopes are positive. Only for water it is negative. And that's why the whole anomalous expansion of water वो सब कहानी यहीं से आती है. ठीक है? If you want all equations in one place, here we go. सब डाल देते हैं. Raoult's law यहाँ पे लिखा है, Dalton's law यहाँ पे लिखा है, and there is all of these. If you put in a non-volatile solute, then there is थोड़ा सा कम होता है vapor pressure. That's given by the first equation. Yeah, relative lowering of vapor pressure. Next one talks about depression and freezing point. Then you talk about elevation and boiling point. And lastly, we talk about pi equal to ICRT, which is osmotic pressure, and I greater than 1 is dissociation, I less than 1 is association. Any doubts? Virat? That's up to you, dude. I mean, I don't know how to answer that question. आपको कुछ खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए. You see what you find value in. There are some links given in the description. See them, check them out. If you want to get them, you definitely can. They'll definitely help you. That's your call, guys. Yeah. JEE is a marathon. You have to study for a long time. Tests really help you. Check out the links in the description. They will give you things. Positive deviation from Raoult's law. यहाँ पे लिखा हुआ है. ये these are stronger than this. This is why आराम से चीजें जा रही हैं वेपर फेज में. What does positive deviation mean? Okay, वेपर कम होना चाहिए, but it's becoming more volatile. So the mixture is more volatile, and hence इसका temperature boiling point जो है वो गिर जाता है. Similarly here, the mixture is less volatile, and इसका boiling point बढ़ जाता है. यहाँ पे दिया है delta H और delta V mixing. Let's start with the first question. ये वाला है बहुत interesting सा सवाल. The vapor pressure on this graph itself, the vapor pressure versus temperature curve for a solution solvent system is shown below. What is the boiling point of the solvent? दो यहाँ पे दिया है, अभी have to just figure out कि कौन सा लाइन solvent का है, वहां से निकालना है. That's it. Let's try this question out, please. Check this out. These numbers, if they're not clear, they are 82, 83, 81 and 80. अगर ये नहीं दिख रहा है तो for some reason. दिखना तो चाहिए, but here, try it out. Virat, that depends on you, my friend. The fact that you're asking this question मतलब आपको कुछ doubt है. Watch this video and see how you like it. मेरे हिसाब से तो it's more than sufficient because I'm teaching you for all the way to JEE Advanced. मेरा यही focus है इस channel पे. Now it's up to you what you can take away from it, right? I am more of a support system. Aakash Byju's JEE. When I say Aakash Byju's JEE is a support system. It all depends on you how you make use of it. ठीक है? Let's try this question out. इसको try करते हैं. 83. Yuvraj is confident about 83. What do the rest of you guys think? 83. देखो 83. Okay. Virat also saying 83. Is this an echo chamber or do you really think it's 83, Virat? क्या लगता है आपको? Human, क्या हुआ? कहां गए? गोलू, आंसर बताइए. क्या चल रहा है? You want to take some more time to look at this? This is not one of those questions where you have to maybe figure things out. It's just direct, right? But you have to think. But इसमें कोई numerical नहीं है, nothing there. नहीं, it's up to you, Virat. You don't have to agree with me or disagree with me. आप देखो, आप खुद परखो. What I'm suggesting is आप खुद परखिए इसको. ठीक है? Don't take my word from it. You will ask 10 people, they give you 10 different opinions. आपको figure out खुद करना है कि what is the most useful for you. Anybody else wants to take a crack at this question? देखो, the main thing is how do you do this kind of a question? Okay. See, there are two axes here, x and y axis. ये axis है pressure वाली, right? Here if I fix temperature, then I get this line. What does this line tell me? This line tells me that there is a drop in pressure. Now, remember I told you, अगर solute add होता है, then there is a reduction in pressure. So, this must be pure solvent वाला line and this must be solution वाला line. Do you understand this? कि कौन सी line कौन सी है? Yeah? Just from this basic theory कि solute add करने से जो वेपर प्रेशर है ऑफ द सॉल्वेंट इज रिड्यूसेस बिकॉज जो सॉल्वेंट की बाउंड्री है वो एक्सपैंड हो रही है. इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड फॉर अ ग्रेटर टेम्परेचर रेंज. इज दिस ओके? रंजना,
Thank you, Ranjana. The answer is 82. Absolutely right. 82 होना चाहिए answer. Does everybody else watching this live right now understand why it's 82? Yeah. The simple idea is this. And then how do you know boiling point कैसे निकालना है? I've given you that this line is 1 atmosphere line. And if vapor pressure equal to atmospheric pressure, then हो गया भाई boiling point. Right? That's it. These are the two concepts you need to use in this question. Number one, इन दोनों में से कौन सी line solvent की, कौन सी solution की? Yeah. And then what is vapor pressure? What is boiling itself? That's it. All right. It's all right, Yuvraj. Virat, I hope that was okay. कि कैसे इसका आंसर 82 है. Beautiful questions. JEE asked such nice question on this chapter. कुछ लोगों को लगता है बहुत आसान सवाल है, आसान है, बहुत अच्छा है, but very conceptual, very nice questions. And if you're going to be doing something like chemical engineering, this is going to be your life. You're going to do a lot of solutions things. The mole fraction of a solute in a 50 molar solution is what? Direct सवाल mole fraction का. और आपको कुछ ज्यादा दिया भी नहीं यहाँ पे. आपको बस दिया है कि 50 molar solution is something into 10 power minus 2. इसको कैसे किया जाए? Yakin? Yes, 82. Good job. Excellent. How do you solve this one? Mole fraction of solute in a 15 molar solution. इस सवाल में ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन तो नहीं दिख रही है मुझे. 50 molar. Let's take the basis, right? That's the first step that I ask you guys to do. अगर molarity का definition आप लोग लिख लो. You try this out. I'll give you time to try it. Don't worry. This is the molarity का definition. Now, because denominator में ये है, right? This is why I will take my basis to be 1 kilogram of water. Okay? This is the first step and most important step. इसके बाद आप please try करिए. If you take 1 kilogram of water, what are you doing? You're fixing number of moles of solute and you're fixing moles of water. If you have moles of solute, you have moles of water. Mole fraction निकालना तो बहुत straightforward activity है. Please try it out. Please try it out. Virat, that's a great field, but you've got to see if you like the kind of job that will happen. Like for me personally, I chose chemical engineering because मुझे लगा था कि इस काम में मजा आएगा. Oh, that's a different thing कि भाई I decided कि let's get into education. But I decided to do chemical engineering because like yeah, I like the idea of designing reactors. I like the idea of being, you know, making these huge things just based on some maths and chemistry and physics and whatever. Pure sciences, right? So that was fascinating to me. So that is what you should be finding out. What is your job going to be like in data analytics? And you like doing that. You have to do that for 8-10 hours a day. Would you like doing that? And based on that, you should decide कि कौन सी engineering करनी है. My honest opinion. Yeah, that's how you decide. पैसा तो आ जाएगा यार. Money, many ways to figure that out. It's okay. पैसा आ जाएगा. So please try this question out, guys. If you're asking me कि data analytics का scope है कि नहीं है, sure. I mean, data is the new oil, right? That's what somebody famous once said. I think Meta released a AI model today, just today. नाम मैं भूल रहा हूँ, but it trained the AI based on around 1 billion photos from Facebook and Instagram. They released a model just today. I forgot the name. So that's data, man. That's data analytics. Google released a model called, I want to say Gemini. वो भी आज वो कल हुआ शायद. Again, that's what's going to power Pixel, and Bard also is going to be a power. They're saying it's better than ChatGPT 4. So yeah, and you've got the whole OpenAI guys doing their thing in what are they doing? AGI and all of that, the latest craziest large language model and its applications and stuff. So I guess there is a future in data, but do you want to be doing that? Anyway, answer बताइए मुझे. Maheshwari ji is saying 31. 41. Okay, I've got a couple of answers from Yuvraj and Maheshwari ji. Aditya Vikram is saying 31. Yuvraj is saying 41. Anybody else wants to take a crack at it? What did you guys do? Can you tell me your process? 47. Okay. What is the process here? मेरे हिसाब से it should just be 50 by 50 plus 55.5. No? क्या होना चाहिए? अगर मैंने ये लिख दिया, excuse me. If I write this down to be this 47, okay. So if I take 50 to be moles of solute in 1 kilogram of water, so I have fixed the moles of solute and I have fixed moles of solvent as well. ये भी मैंने फिक्स कर दिया है. तो
हमको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मतलब इट विल बी 50 divided by 50 plus 55.5. It's okay, bro. It's okay. Good job. Good job. Good job. Yes, Yuvraj and Aditya Vikram. सही है. विराट, सम भी तो सॉल्व कर लो. We can talk about everything under the sun. And I have fun talking about this as well. But इस सेशन का थोड़ा सदुपयोग भी कर लीजिए तो अच्छा होगा, है ना? Yes, 47.37. Nearest integer is 47. Lovely work. Good job. 47. Oh, Agent 47. Any of you Hitman fans? खैर, इसलिए ये सवाल ऐसा बनाया गया था. 0.473. विराट जी बोल रहे हैं सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वैल्यू गोइंग डाउन. माय ओपिनियंस क्या मैटर करता है? आप खुद देखो, परखो. देयर आर excellent jobs in both of these fields. I have one of my closest friends, his name is Fayaz. He did civil engineering from NIT Surathkal. He went on to do his masters from, he worked at L&T and L&T sponsored his masters from IIT Madras. And after that, right now he's working at Shell. Dude, these are dream jobs. Another really good friend did mechanical engineering, Karthik Suresh. He's made amazing videos for JEE Advanced, by the way. 2019 की playlist आप देखोगे. He right now is working, not Shell, sorry, as ExxonMobil, not Shell, ExxonMobil. Karthik is also working at ExxonMobil. He's in the US right now. State of the art is, like cutting edge of technology is what I would call it. Yeah, they write code and that helps big machines drill oil and also figure out shale oil and very fascinating things. It's interesting that you bring it up, Virat. Find out from your family and friends about this in some detail or just look it up online. There are opportunities for everything. आपको मन होना चाहिए करने के लिए, वो जरूरी है. अगला सवाल देखते हैं. ठीक है? You derived a relationship between mole fraction and molality. Yes, Aditya Vikram, excellent stuff. Yes, that's all you've got to do. Thank you, Aditya. Which one of the following, and by the way, यहां देखा आपने, मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया. I just used the basic definition of molality and I took the basis to be 1 kilogram of water because that was the denominator. Now, whatever formula you're using, you'll have options. Either you take 1 liter of solution if you have molality or you take 1 kilogram if you have molality. These are broadly the most basis. या तो फिर तीसरा बेसिस होगा 100 ग्राम. That's all. These are 3 bases. हमारे लिए इतना काफी है. When you do chemical engineering or mechanical engineering, you'll have more of this stuff, a lot of these calculations. But अभी के लिए this is sufficient. Now nothing fancy. देखो उसके बाद तो we use basic definition of mole fraction. ये क्या है? Mole of solute. अगर ये आपको ज्यादा लग रहा है किसी को, somebody watching it not live, by mole of solute plus solvent. That is all I did over here. And solvent क्या है? पानी है, right? So that's it. Anyway, वाला सवाल करते हैं. Which of the following 0.06 molar aqueous solutions has the highest freezing point? Highest freezing point. ध्यान से पढ़ना इस सवाल को. What is the answer to this one? Yeah, I could never play it, Yuvraj. I'm really bad at stealth games. I think I've gotten better, but I played a game called Thief when I was in college and I was so bad at it. You're supposed to thief around, right? You're supposed to hide in the shadows and do things. I was really bad at that game. And Hitman also was very stealth stuff, so I could never play it. Anyway, can you try this one out, guys? Which of the following 0.06 molar aqueous solutions has the highest freezing point? कैसे करोगे ये? Hint, there is a Van 't Hoff factor involved here. Yuvraj, look at that. I liked how quick he was. Yuvraj is saying C. Anybody else want to ratify that answer? C. Okay. Virat Bhai Sahab is also saying C. Himanshu, good to see you here. Okay. IKF. Exactly, Virat. You're absolutely right. Good job. Bhavesh, good to see you. Also giving me the answer C. Sahi hai. Now, this is what I expect of you. Lovely. Emlon, I like this, guys. You guys are all reading the question carefully. This is all I expect of you. And massive respect for you for not taking the bait. ध्यान से सवाल करने के लिए thank you. Highest freezing point. Highest freezing point मतलब smallest delta TB, right? Lowest I value will have the least TB, delta TB. मतलब will have the highest freezing point. Highest freezing point तो होता है पानी का 0. उसमें मैं थोड़ा सा सॉल्वेंट डालूं कम हो जाएगा. बट वो सॉल्वेंट का I की वैल्यू जो सबसे कम होगी, that will have the highest freezing point. Excellent one. इसका I value is going to be 2, इसका is going to be 6, इसका is going to be 6 नहीं, sorry, 3 and 2 is 5. इसका is going to be 3. Right, and iska I is obviously going to be 1. So this has the lowest, highest freezing point, lowest delta TB, and highest TB. That's what I'm finding out. Excellent work, love it. Good morning, Himanshu. बढ़िया है. अगला सवाल किया जाए.
मजा आ रहा है ना इन सवालों में? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वंस. यस युवराज, थैंक यू फॉर दैट. And that's what JEE Main is doing these days. They're not trapping you in massive calculation. They're just testing your ability to just figure things out on the fly. Yeah, absolutely. Good stuff. Good stuff. Hyper, what's up? Okay. CO2 gas is bubbled through water during a soft drink manufacturing process at 298 Kelvin. If CO2 exerts a partial pressure of 0.835 bar, then find the number of millimoles of CO2 which would dissolve this much of water. मतलब इतने पानी में जाएगा. तो लुक्स लाइक दिस इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन हेनरीज लॉ वाली चीज. ट्राई करके देखो, सीधा साधा बार में. हाईएस्ट इज ऑफ बी. आदित्य विक्रम कैसे भाई साहब? एक बार वी विल गो बैक टू दैट. उसका लोएस्ट होगा ना. आदित्य विक्रम टुक द ट्रैप, फेल इनटू द ट्रैप. दैट विल बी लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, राइट? लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट विल बी बी बिकॉज उसका वैल्यू आई सबसे ज्यादा है. समझा आदित्य? आदित्य विक्रम, या लुक एट द क्वेश्चन. हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री वाटर, मतलब पानी का. उसमें थोड़ा सा भी डालो, थोड़ा कम होता है, कम होता जाएगा. इफ आई इज हाई देन डेल्टा डी भी बहुत कम हो जाएगा, राइट? कूल आदित्य, लेट्स डू दिस. सवाल करो, टाइम पास बहुत हो गया. सवाल करो. सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, प्लीज ट्राई दिस आउट. Aditya, is that okay? If you have doubts, please ask me. Yes, Virat, we will do B block. I showed you a plan, right? कि हम लोग ये करेंगे, ये करेंगे. This is the plan once again for the sake of Virat भाई साहब. सब है, पूरा प्लान है. देखो कहाँ पे क्या करेंगे, डेट्स हैं, etc. Yeah. I show that in every class because students like ये वाला चैप्टर भी कर लेते हैं. सारे चैप्टर अच्छे हैं. I'm just going in the NCERT order of things just to make life easy for everybody. 0.45 millimole says Yuvraj. Okay. 0.45 millimole. अच्छा, तो because I've asked for number of millimoles as the answer. 0.45 is ठीक है, cool. युवराज, KH की वैल्यू 10 पावर 3 बार है, ठीक है. इसमें आपको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा. युवराज ने ट्रैक कर दिया आंसर. ओके ओके, करो करो, आराम से करो. इट्स ओके, ट्राई करो. I don't understand what AGVD is saying. I don't know if it's meant for this channel or for a private chat, but I don't get it. Please try this out. AGVD, if it's not relevant to what we're doing right now, I may have to put you on a timeout. So please keep things relevant to this right now. Yeah, please. Dubey ji, मुझे call कर रहे हैं. I should tell him that I'm doing a session right now. कहाँ गए Dubey ji? Hold on. Let me leave him a voice note. That's the easiest, right? Yeah. कुछ गलती हो गई? Okay, let me give you a bit of a hint. Unit of KH simple है, बार है. So the expression you want to use is P gas is KH times X gas. Now X gas is what you have to find out. KH तो straightforward है, दिया हुआ है. X gas कैसे निकालोगे? X gas is X is mole fraction, right? So now CO2 का pressure जो है 0.835 bar. Can you from that get mole fraction? That's a little hard. We don't know the moles of CO2. How do we get moles of CO2, guys? अच्छा, लगता है कर लिया आपने. Yeah, bro. Going away you are. I don't block and all, but I've just put him in a timeout. अगर फिर से spam करेगा तब block करूंगा. I've just put him in a timeout. Him or her, whatever. No discrimination. Spammers get put in timeout either way. So the mole fraction of the gas कैसे निकालोगे? Right? How are we doing this? Just by this, okay, that we've got. What do we need? We need to find moles. Sorry, mole fraction तो है. We need to find moles of CO2. अगर mole fraction निकल गया है, तो moles कैसे निकालोगे? What is this going to be? It's simply going to be mole of CO2 divided by mole of CO2 plus, oh, देखो, ये पानी यहां पे दिया हुआ है, right?
पानी है दिया हुआ टू बी 900 ml. Now I've just taken that to be equal to 900 gram because पानी की density is 1 gram per liter and the amount of CO2 is so small कि I can just say कि boss I can ignore this, इसको मैं हटा सकता हूँ. तो this is the same thing जो NCERT बोल रहे थे ना, ये फॉर्मूला मत करो, वो फॉर्मूला मत करो, कोई फॉर्मूला मत करने की जरूरत नहीं है. We are doing this from first principles, guys. No need to mug any formula, right? And just do this, cross multiply, you get what your friends just said, 0.025 moles, which means 25 millimole. Excellent work on figuring it out. युवराज, विराट, आदित्य, विक्रम, सही है, brilliant. हाइपर क्या हुआ, मुश्किल हो गया? All right, हाइपर, see you man. Please take care. See you. बाद में देख लेना सेशन, it's absolutely fine. Yeah, Henry's law, but this mole fraction वाला concept, देखो, nothing to mug here, right? NCERT में लिखा है कि if N2 is greater than N1 or whatever कुछ लिखा है, then you can get one more W2. Yeah, blah, blah. अरे कुछ नहीं भाई, write down the basic formula and you will figure it out. See, कुछ नहीं मग किया है, बस Henry's law and mole fraction का definition. Henry's law, mole fraction definition. Henry's law में KH की वैल्यू दी गई थी बार में, that's why I've used this way. Otherwise, I could also do P gas into KH equal to K equal to X if the KH का unit is given to be bar inverse, but it's not. Okay, let's move on to the next question. आगे बढ़ा जाए. Yeah, all good? Okay. Calculate the weight of non-volatile solute in gram having molecular weight 40U, which should be dissolved in 57 gram octane to reduce its vapor pressure to 80%. ओफ, तीन चीजें दी हैं. कैलकुलेट करना है वेट मतलब मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का करना है कुछ. हैविंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 40U. ओके, सो ग्रेट. MW इज गिवन टू बी 40. ओके, और कितना में डिसॉल्व कर रहे हो? 57 ग्राम ऑक्टेन. अच्छा, ऑक्टेन, ऑक्टेन मतलब C8. H कितना होगा? H2N plus 2, H into 16 plus 2. तो यू गेट द फॉर्मूला ऑक्टेन. ठीक है, ठीक है, इससे तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो ऑक्टेन का. तब तो हो गया ना. Then it is simply delta P is I times X times P naught. I हटा दो, I is 1. Please solve. RLVP, Raoult's law, vapor pressure. अरे वाह. Is that what you meant? Relative lowering. नहीं, it's Raoult's law नहीं. Relative lowering vapor pressure. Yes, Imran. Please try. Vikram, Aditya Vikram, I like how quick you were. Do you want to check that answer एक बार फिर से? एक बार चेक करिए. Quite close, but I feel just check करिए. विराट also is getting 4. लगता है 4 होगा. देखते हैं फिर. सो इसको कैसे कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, विराट भाई साहब ने आंसर बदल दिया. आदित्य, डू यू आल्सो वांट टू चेक? द फर्स्ट स्टेप एंड द इजीएस्ट थिंग टू डू इज निकाल लो आप लोग mass of this because you need the molecular mass of this. Why do I need molecular mass? Because using that molecular mass I'll get moles. Why do I need moles? Because I need to get mole fraction. The goal is to get mole fraction. Why? Because delta P is X into P naught. What is delta P? Relative lowering, right? P naught minus this thing, the P right over there. TS बोलते हैं saturated pressure, जो भी बोलना है बोलो. This is 20% of P naught. क्यों? Vapor pressure to 80%, मतलब delta P is 20%. यही मैं लिख रहा हूँ, right? Nothing complicated so far. No wrong है? Okay, Virat. Try करो. Do you want me to help you further? Are you trying it out? Virat, Yuvraj, Aditya, anybody else here right now who is active on chat? Imran भाई, हिमांशु क्या हुआ? आप आंसर दे रहे थे, अब कहाँ गए? Anybody else who is active? Let me see. यकीन भाई साहब, what's happening? You want to take another minute? Try it out. कोई जल्दी नहीं, आराम से करो. 5. Yuvraj says 5. And Aditya, right at the same time, says 5. Yes, I like that answer. I like that answer. Yes. Virat also says 5. तीनों ने same समय किया. सही है. That's great. Do you guys have another WhatsApp group on the side where you guys are doing this? Sanatan ji is saying 5. Okay. Sweet. Sweet, sweet, sweet. Good job. So, once you get this, see, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं कुछ जल्दी नहीं कर रहा हूं, right? इसमें seem like how did I leap from here to here?
the point is this comes out of practice. थोड़ा सा जल्दी करना मतलब if you are reducing the vapor pressure to 80%, मतलब बदलाव हुआ 20% का. That's why I wrote this down to be 20% of P naught. That means X is equal to 0.2. That's what this means. ठीक है? That is what the most important thing is. उसके बाद तो भाई डायरेक्ट ही है, right? Cool. Ah, shout. Ouch. I knocked my foot against the table. Delta P by P naught is 20%, 0.2. That's what I'm trying to say. That's how you get the value of X. Koi group nahi hai. I'm kidding, Yuvraj. I have a very weird sense of humor. Hey, Fasihuin, sorry, I'm just going to call you Fasiha if that's okay. Or F for short, right? Because I don't want to mess up the pronunciation of your name. Is also saying 5. Great. So identifying that delta P by P naught is 0.2. Once you do that, life becomes very straightforward. Life becomes very easy, right? ये M by 40 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 40 दिया हुआ है molecular weight. And this 57 by 114, I've just put that here. So 0.2 into this becomes this. Solve and you get mass to be 5 gram. Awesome. क्या हुआ आदित्य? नहीं हो रहा है सवाल? कोई नहीं. Don't worry about it. Don't give up hope. I'm good. The molar elevation constant for water is 0.56 Kelvin kg per mole. Calculate the boiling point of a solution made by dissolving 6 gram of urea in 200 gram of water. Okay. So this again is the whole delta TB equal to I KB times M. Use that expression here. सीधा है. I is 1. Direct 1. Please try it out. हो गया? बताओ आंसर. ग्रेट आदित्य. वो वाला हो गया, बहुत बड़ी बात है. अगला वाला करो. भवेश is saying 5.5. भवेश 5.5 मैं समझा नहीं कैसा हुआ. I showed you the solution. It's 5. Sorry, I missed your thing. Satvik, good job. It is 5. Absolutely. आदित्य ये वाला करो. Everybody else also please try this out. यूरिया का you'll have to just get the molecular mass, right? If you want to know अगर ये नहीं हो रहा है तो 14, 12, 1 और 16 those are molecular weights. Usually JEE में दे देते हैं सब चीजें, तो मैं अभी दे ही देता हूँ. Why keep that away from you? हाँ 5 आ गया. गुड जॉब. अगला वाला करो आदित्य. We've moved on. Is 5 for this one? 5 नहीं होगा ना. बॉइलिंग पॉइंट 5 तो नहीं हो सकता. मे बी आप पिछले वाले की बात कर रहे हो. आई एम आस्किंग अबाउट बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस फॉर दिस क्वेश्चन. युवराज, सो क्विक, ऑसम. युवराज सेज 100.28. ओके. विराट इज सेइंग 0.01. विराट, आई फील यू आर टॉकिंग अबाउट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, राइट? डेल्टा टीबी, नॉट द टेम्परेचर. ओके, कूल, ठीक है. लेट्स सी. सो विराट, आई थिंक आई नो व्हाट यू डिड. Virat, I think you forgot about this 200 gram of water. 20 गुना, हाँ, must be that. I mean, और क्या हो सकता है? But नहीं, उससे भी नहीं आएगा 0.01. 100.2. विक्रम ठीक से करो. आदित्य, विक्रम भाई साहब ठीक से करो. So the idea is simple. Delta TB is I KB times M. I is 1, right? The mass of this is 60 gram per mole. 28 because there are 2 nitrogen atoms, right? That's 2 into 14. And 4 क्योंकि there is 4 into 1. And 12 because there's, well, 1 into 12, and 16, 1 into 16. That's it. Add it all together, you get 60 gram per mole. Why did I do this? Because molality निकालनी है, और molality के लिए मुझे mole of solute चाहिए. That's why I need the urea का mass. Mass of solvent तो 200 grams दिया है, but I need it in kilogram. So I multiply with 1000 gram by 1 kilogram. I'm basically just multiplying with 1. और देखो ग्राम cancel हो जाता है, ये बन जाता है 5 गुना, and 6 by 60 is simply 1 by 10, right? So it's 5 by 10, which is 1 by 2. Now this is not the answer. Okay, ये आंसर नहीं है. स्टूडेंट्स कभी कभी जल्दी में बोलते हैं हाँ ठीक है मोल M निकल गया, आंसर हो गया 0.5 गया, move on. No, that's not what's happening, right? You have to multiply this with this. So it's half of 0.56, which is 0.28 degree Celsius. There is a reason why I've put it to be 1 by 2 and I did not write it to be 0.5, because if I do 0.5 then I have to multiply, but it is easier to divide by 2 than to multiply by 0.5. I know it's the same thing, but कभी कभी जल्दी में these things matter. Okay, जहां तक हो सके लीव थिंग्स इन फ्रैक्शन और बिल्कुल एंड में ही सब्स्टिट्यूट करो. ओके, लाइफ विल बी अ लॉट इजियर दैट वे. खैर, दिस इज द आंसर, 100.28 डिग्री सेल्सियस. एक्सीलेंट जॉब ऑन गेटिंग इट. अगर जिन कुछ लोगों को नहीं मिला, डोंट वरी अबाउट इट. आई होप दैट आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड इट समझ में आ गया. या
Okay, all right, sweet. This is an interesting question. Could have more than one correct answer. For an ideal binary liquid solution with P naught X greater than P naught Y, X is the mole fraction of X in liquid phase, Yx is the mole fraction of X in vapor phase. Okay, X, Y and Y are the mole fraction of Y in liquid and vapor phase respectively. Which of the following relationships is incorrect? Good job Aditya. That's right. ये वाला ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करिए. It could have more than one correct. Please try it out. Excuse me. Please try it out. So, how do you guys like these questions? Well, they are from JEE. You should quote unquote like them. But like, हो पा रहे हैं सवाल या फिर थोड़े मुश्किल लग रहे हैं? Let me know. और अगर मुश्किल लग भी रहे थे तो after you've seen this, after I've given you the ideas, is it more doable, less doable? Let me know feedback, yeah? Even if you're not watching live, feedback दे सकते हो on the comments. That could also work. Here. All right, sweet. I'm good, Ayush. How are you doing? Can you try this one out? Because I think Nidhi the other day pointed out कि यार if you give JEE के PYQ सब लोग already कर चुके होंगे, तो थोड़ा सवाल को बदलो. तो like okay, that's a good idea. Let's do that. नदीम जी, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं. More than one correct. It's possible. One or more correct. MSQ बोलते हैं ना उसको. This is that kind of question. Okay. Okay. तो नदीम बोल रहे हैं B, आदित्य बोल रहे हैं थर्ड ऑप्शन, एंड Fasihu G is saying D. Okay, I'm going to call you Fasiha from now so that I don't mess up your name. Okay, so looks like तीनों incorrect है क्या? सिर्फ ये वाला सही है? अच्छा, let's see. If we take the community की voice, all three of you are saying three different things. So अगर तीनों combine करें लग रहा है कि सिर्फ A वाला सही है. अच्छा नहीं. Ayush is saying B and C. Okay, ठीक है. Ayush says both of these. Anybody else wants to pipe in? Could be more than one correct. एक hint दे दूं, ये वाला तो सही होगा, which means it's you have to figure out the incorrect option, right? ये वाला सही होगा because it's an ideal solution. अगर ideal है तो delta H और delta V mixing दोनों zero होगी. तो let's eliminate this option. I'm gonna just write eliminated over here. So figure out among the other three. Okay, Ranjana, A and C. Okay, ठीक है. Okay. Also, what does option B mean? And I'll tell you that there's a 10-15 second way of doing this. And we'll do the direct long way also. पहले मैं जल्दी वाला पार्ट बता देता हूँ. जल्दी में ये eliminate हो गया. दूसरा भी eliminate हो सकता है. देखो, what is x and xy? xy is the mole fraction of this and yy. Okay. इसके भी chances होने के बहुत कम है. Because the only reason this will happen if p naught x equal to p naught y. अगर if it's not equal, then it's not going to be the same. तो ये दोनों तो हो गए, हट गए. Now you just have to figure out this and this. This one makes sense. ये वाला why does it make sense? Because देखो, अगर ये ज्यादा volatile है, this means that x is more volatile than y. तब तो हो गया, ये भी हो गया, right? Yes? Oh wait, incorrect, right? हमको correct निकालना है, incorrect निकालना है. देखते हैं. A and C, neat aspirant here. That's great, Syed. Aditya saying A and C, Yuvraj saying B and C. ठीक है, देखते हैं. What is DH mixing? Aditya Vikram, DH is delta H of mixing. DV is delta V of mixing. जब आप solutions को mix करते हो, तो heat निकलती है अगर वो नॉन आइडियल सोल्यूशन हो. हीट नहीं निकलती है या फिर हीट कंज्यूम भी नहीं होती है, निकलती भी नहीं है. डेल्टा H is equal to 0 when it's an ideal solution. ठीक है. डेल्टा V mixing is equal to 0. Again, an ideal solution. Otherwise, volume बढ़ और घट सकता है. That's what we're talking about. Good. What is incorrect, Yuvraj? X is definitely more volatile than Y. Okay. So, I can write these things down. Yeah. This is from Dalton's law. And this is from Raoult's law. Right? This is simply PA. The P, जो भी, this is actual this thing. ठीक है. So I write it down for both of these things. Okay, this is for x and for y. I divide them both.
I get this nice expression. I also know that this P naught x is greater than P naught y. So LHS is greater than 1. Agar if this is greater than 1, that means that this whole thing is greater than this whole thing. मतलब देखो, ये वाला तो सही लग रहा है. ओ नहीं, ऑप्शन में उल्टा लिखा था. ऑप्शन में एग्जैक्टली उल्टा लिखा था, राइट? यहां पे हमने वी हैव जस्ट प्रूव्ड दैट y of x, which is वेपर फेज में x एंड वेपर फेज में y का रेशियो इज ग्रेटर देन दिस, इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड. बट इसमें उल्टा लिखा है. एंड इट कैन नॉट बी इक्वल, नो, बिकॉज अगेन वी हैव प्रूव्ड दैट अगर ये अनइक्वल है तो ये भी अनइक्वल होगा. देयर इज एन इनइक्वालिटी ओवर हियर. ओके, इसलिए ये दोनों हो जाएंगे इनकरेक्ट. इज दैट ओके? Yes, yes, Yuvraj, you have to select incorrect options. Yes. Sai, thanks for joining in, man. We just did a solutions ka NEET wala session a couple of days back. If you want a playlist, link to that playlist where I have done all crash course stuff. On the NEET channel is just called Fast Track. That's the only difference. But yeah, we're doing some things there as well. You can check this outside. Has the playlist. Pehla playlist JEE ka hai, dusra wala NEET ka. You can check it out. I just maintained a list of all the sessions I'm doing. Okay, sweet. After, yeah, exactly, option ulta likha. We need to figure out the incorrect ones. Yeah. So I didn't put this one in NEET. Yeah. So I have similar questions in JEE and NEET. If you want, check out the NEET questions as well, by the way. There are these questions, but thoda sa change kiya here and there. That's quite interesting. If you want to check it out, you can, for practice sake. Aage badha jaye. Shall we move on? Are we good? Do you guys have any doubts in any of this? Sab theek chal raha hai. Aage badha jaye. Yeah. Okay, 18 gram of glucose is added to some amount of water. The vapor pressure of water in this aqueous solution is what? ये वाला फिर से वही है डेल्टा पी वाला आइडिया. Try it out. No I value यहाँ पे required. एक डेसिमल तक आंसर दीजिए. I think the only thing you need is 1 atmosphere equal to 760 torr. Does that give you a hint? Yes, no, maybe? Try करके देखिए please. So 18 ग्राम of glucose मतलब I is equal to 1. Glucose यानी कि कहाँ गया भाई साहब? I equal to 1. 178.2 gram water. Molar weight is 18 gram per mole. So with this, I can get mole fraction of glucose. And what expression do I need to use? This delta P by P naught is equal to X. That's it, yaar. बहुत direct है. After you get this value of X, then what do I do? X into P naught. Oof. Okay. But once I get X, what do I do? Acha. So 1 minus x into P naught will give me the answer. Do you understand that? X into P naught is the badla hua, kitna ghata. But I want to know kitna bana hai, right? How much is actually there? So I need to do 1 minus x into P naught, and that is going to be the answer. Do you follow this? ये logic समझ में आया कि नहीं? Yes? If not, please tell me. वीरू, अच्छी बात है तुमको पढ़ने को मिल रहा है. व्यूअर से किसको फर्क पड़ता है? क्रिश, रिलेटिव लोअरिंग मिलेगा. यस, एग्जैक्टली. सनातन 360 says सनातन. ओके सनातन, जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नंबर्स 360 होने के चांसेस बहुत कम है. बिकॉज देखो, आई हैव समथिंग कितना है 18 by 60, राइट? 18 by 180. इसका मास तो 180 है ना. 0.1 मोल है. 0.1 मोल से डू यू थिंक इतना कम हो जाएगा वेपर प्रेशर? मुझे नहीं लगता है 0.1 से इतना कम होगा. थिंक अबाउट इट. सो यू ऑलवेज हैव टू चेक योर आंसर. यू मे गेट आंसर वेरी क्विकली, बट उसको एक बार क्रॉस चेक करना जरूरी है. क्या इतना कम ग्लूकोज डालने से इतना ज्यादा कम हो जाएगा वेपर प्रेशर? आई डोंट थिंक सो. ट्राई इट आउट. सॉल्व करो वीरू. सॉल्व द क्वेश्चन आउट. मेक यूज ऑफ दिस सेशन. X is simply this, right? 18 by 180 divided by 18 by 180 by 178.2 divided by 18. So leave it just like this, and interestingly you get X to be simply 0.01, right? 0.1 divided by 0.1 plus 9.9, that's 0.1 by 10, that's 0.01. उसके बाद क्या बचा है भाई?
बता दो अब आंसर, तो तुम्हारे 90% काम कर ही दिया आपका। एंड इंटरेस्टिंगली या 99% basically what this 1 minus x is equal to 0.99. That is what you get. Why? Because x is equal to 0.01 and you multiply that together. Delta p is 0.01 into 767.6 torr. This is obviously not the answer. This is the amount जिससे कम हुआ, किससे कम हुआ, 760 से कम हुआ. So answer is 752.24 torr. Sanatan, is that all right? That's great, Viru. ये तो क्लास 11 में भी कर सकते हैं, उसमें क्या है? देखो कुछ नई बात नहीं है. मोल फ्रैक्शन मैंने यूज किया है. The only extra formula is this, right? ये फॉर्मूला है, अप्लाई करो. थोड़ा सा मैथ्स ही है, अरिथमेटिक है. Solutions का basis is mole concept. And if you want to check out the 11th grade stuff, Viru, there is a link just above this, yeah, that has all my playlist of 11th grade stuff, 12th grade, जो भी है सब है. Shreyanshi, did you follow up to 7.6 torr? Sanatan, yeah, you can't do that here, Sanatan, because if you do that, थोड़ा बदल जाती है चीजें. Things become a little complicated, right? Yeah. So approximations are good, but not a numerical entry question. Numerical entry question में approximation मत करो. Shreyanshi, can you tell me which part did you have difficulty with? Yeah, Shreyanshi, I'll repeat for sure. कौन सा part समझ में नहीं आया? Did you follow till 7.6 torr till here? Or did you follow? What did you not follow? Can you tell me? I'll explain that part. We'll go ahead, man. Ask. This is the expression you need to use for relative lowering of vapor pressure. As my friend pointed out, RLVP sounds very cool, so I'm using that. X key value is mole fraction of solute, and this is solute plus solvent, right? That's all I'm doing over here. I get mole fraction. Mole fraction is 0.01. Delta P I get to be this value. Delta P मतलब कि ये बदलाव है. This is a change in pressure, but I need to know कि इसको डालने पर कितना actual pressure है. So I do 760, which is the actual pressure, minus this delta P. So this P naught minus delta P, which is just basically P naught minus P, right? So this gives me P, which is all I did. 7.6 कैसे? That is the definition, no? Relative lowering का definition यही तो है. P naught minus P by P naught equal to X. That is the definition. I have to find out P. P is the main focus here, right? यहाँ पे P naught है, right? Is that okay? Shreyanshi? वीरू आपने कोई पूछा नहीं. Shall we move on? आगे बढ़ा जाए. Shreyanshi, if this part is a little hard, you have to go through NCERT. I can show you exactly which part of NCERT too, if you like. Just give me a second, huh? Here it is. NCERT, भाई साहब, खुल जाओ सिम. Ta-da-da-da, NCERT. Hold on. यही खुल गया क्या डायरेक्टली? नहीं. 1 second. First, Shreyanshi, we'll take a bit of a detour because we are doing a revision session and वो theory पढ़ाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है. So I'm just guiding her to the right theory. Shreyanshi, please read this part. Yeah, this. Okay? This whole concept about relative lowering of vapor pressure, I have used this expression. ठीक है? यहाँ पे 2 is basically solute. Okay? That's it. And ये दूसरा वाला part I have not done. Don't do this. For this question, don't do the approximation because the approximation of only works when mole fraction बहुत कम है of the solute as compared to solvent. For this question, focus on this part. Page 2.25, 2.6.1. ठीक है? I'm going to go back to the session now. We're going to continue with the next question. ठीक है? All right. Good afternoon, physics. All right. You're welcome. Glad it helped. If it's इतनी जल्दी समझ आया बहुत अच्छी बात है. नहीं तो फिर से देख लेना. For the solution of gases W, X, Y, and Z in water, the Henry's law constants are some value. What is the correct plot for the given data? Okay. There are 2 options here and there are 2 more over here. Unit यहाँ पे है, ठीक है? 2 और यहाँ पे है. Let me just copy paste this. I was supposed to copy paste this, but I forgot. So hold on. Let me put them all on this one slide. 20. Slide number 24. 24. Oops. Yeah.
भाई हो जा कॉपी। Okay, I have another idea here. Let's go C, let's go V. Okay, okay, let's do it this way. I think it's better this way. Hold on. Yeah, got it, get it, get it. Where is my screen? My screen is right here. दिख रहा है, right? This is the question, guys. Yeah? वीरू आपने क्वेश्चन पूछा ही नहीं। करेक्शन विंडो ओपन करने पर एसबी राइट टिक आ रहा है, ही मींस एवरीथिंग इज ओके ना? सनातन, या डूड, आई मीन आई हैवंट सीन द फॉर्म, सो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन फॉर दिस बिकॉज मैंने खुद नहीं भरा है, राइट? आई हैवंट फिल्ड द फॉर्म माई सेल्फ, बट describing what you're saying, it seems like it's okay, but you'll have to actually check. Yeah, I'm sorry, but I'm not going to be great help there. Please try this question. I will read Viru's doubt. NEET में ये सब क्वेश्चन आएंगे. Physics mentors, this is a JEE session. This question particularly could come in NEET as well. And in fact, JEE के कुछ सवाल थोड़े से बदल के NEET में आ जाते हैं. So for sure, yeah, why not? Viru, what are you saying? Yuvraj is saying option C. Yuvraj, are you sure? Read the axis carefully. X axis, Y axis ध्यान से पढ़िए अगर नहीं दिख रहा है तो. वीरू saying क्लास 11 में उनको हुई थी थोड़ी मुश्किल, 3 months में कर सकते हैं. वीरू, are you in class 11 right now or you're in class 11? It depends यार on your effort. That question is not for me to answer but for you to figure out. है ना? कितने समय में क्या कर सकते हैं वो आपके ऊपर है. मेरा इनपुट तो उसमें नहीं काम आएगा. S Divya, when to use P0 minus P0 P1 by P0, P0 minus P1 by P1. Arre wah, Divya has asked a lovely question. Divya has asked a lovely question. My answer is I don't use 2 equations. I use only 1 equation. I use the first equation. ठीक है? Let me tell you why. I use the first equation because the first equation gives me mole fraction of solute. If I want the second equation, मुझे solvent का निकालना है, I will just do 1 minus that ना. Are you following what I'm saying, Divya? एक बार मैं फिर से बोलता हूं, ठीक है? Your 2 equations are basically mole fraction of X, the solute, and mole fraction of the solvent, right? तो mole fraction of solvent निकालने के just do solute minus 1 minus solute, ना? Should work out as well. And what you're talking about, I think, takes an approximation कि यार एक का जो है number of moles बहुत ज्यादा है. Hey, Hare Krishna, Nitish. Hey, Rek. Welcome, welcome, welcome. Rek की classes होती हैं. Now I like this, right? Yuvraj is saying A. Yuvraj changed their answer to A. Lovely, good work. Krish is saying D. Sanatan is saying D. So it's either A or D. Looks like the answer is either A or D. Okay. I like that nobody is saying B or C. चलो B और C को हटा देते हैं. Why is it either A or D? देखो slope है 40. तो either it is the highest Z slope होना चाहिए तो यहाँ पे भी highest होना चाहिए. I am telling you that the answer is A because it's mole fraction of water. क्यों? देखो ये जो एक्सप्रेशन है तुम्हारा KB नहीं KH टाइम्स X, दिस X इज दैट ऑफ सोल्यूट. यहां पे है X ऑफ सॉल्वेंट, तो इफ आई एम प्लॉटिंग वर्सेस X ऑफ सॉल्वेंट इट विल बी 1 माइनस दिस ना, P इज इक्वल टू KH इंटू 1 माइनस X. सो P विल बी इक्वल टू KH माइनस KH टाइम्स X. ओके, सो ये स्लोप हो जाएगा माइनस KH एंड ये हो जाएगा KH इटसेल्फ. समझ में आया? लवली क्वेश्चन, नो? वीरू यार आप उसको मुझे 4 बार बोलोगे, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, नो? आपकी बात मैं सुन रहा हूं बट आई डोंट नो हाउ आई कैन हेल्प इन दैट. वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, राइट? श्रेयांशी, ए इज द आंसर, यू सी, राइट? गुड जॉब. नितिश, व्हाट्स अप? Connected, yeah, I'd say Hare Krishna, that's my connection. I eat food without onion garlic, it's lovely food. मुझे खाना ऑर्डर करना चाहिए. थैंक यू नितिश फॉर रिमाइंडिंग मी. मैं खाना ऑर्डर कर लेता हूँ. 12:30 तो हो गया. इट्स ओके, आई डोंट माइंड. सेशन वाज सपोज्ड टू बी 1 घंटे का. आई डोंट माइंड एक्सटेंडिंग अ लिटिल बिट. इफ यू गाइस डोंट माइंड वी कैन स्टिक अराउंड एंड 1-2 कॉल और कर सकते हैं. दिव्या जी, आई एम एक्सप्लेनिंग प्रॉपर्ली बट आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा. दिव्या, पिंग मी ऑन आई टीच केम, आई विल गिव यू थिंग्स टू रीड. सिंस दिस इज अ रिविजन सेशन, मैं एक लेवल तक ही डिटेल में जा सकता हूं. प्लीज पिंग मी हियर, आई विल गिव यू गुड बुक्स टू रीड. इफ यू रीड दोस बुक्स आपकी लाइफ बहुत आसान होगी. एनसीईआरटी पहले पढ़िए, उसके बाद यू रीड द अदर स्टफ आल्सो. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन लेट मी एक्सप्लेन एक बार फिर से, ठीक है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? दिस इज योर एक्सप्रेशन P equals to KH times X, right? Is this okay? This X is mole fraction of solute.
बट सवाल में दिया है, देखो एक्स एक्सिस में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मतलब विच इज अ सॉल्वेंट. सो सॉल्वेंट इज गोइंग टू बी 1 माइनस सोल्यूट. दैट इज ऑल आई एम सेइंग. ठीक है. एंड एक लेवल तक मैथमेटिकल मेच्योरिटी जो मेरे दोस्त सत्या जी कल ही बोल रहे थे चाहिए. मतलब कि ग्राफ में क्या मतलब है, व्हाट आर वी प्लॉटिंग, व्हाट हैपेंस इफ यू शिफ्ट दिस, वो मैथ्स थोड़ा बहुत तैयारी करनी पड़ेगी उसकी. दिस इज अ मैथमेटिकल थिंग, राइट. सो आंसर इज ईदर ए और डी. अब ए और डी कौन से पिक करना है? आई एम पिकिंग ए बिकॉज स्लोप नेगेटिव होना चाहिए. क्यों? क्योंकि आई एम प्लॉटिंग दिस. दिस इज व्हाट आई एम एक्चुअली प्लॉटिंग. ओके, नॉट दिस, नॉट दिस. दिव्या, आई होप दिस इज बेटर. बट अगर अभी मुश्किल हो रही है तो थोड़ी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी यार. दिव्या, आई फील फॉर यू. आई नो बहुत मुश्किल हो रही है, बट एट दिस पॉइंट इससे ज्यादा एक्सप्लेन करना इज वेरी हार्ड फॉर मी टू डू. ठीक है. इज दिस ओके? यस वीरू, थैंक यू फॉर कमिंग. अगर आपको मुश्किल हो रही है, पिंग मी ऑन आई टीच केम. आई विल गिव यू थिंग्स टू रीड, राइट, फॉर श्योर. दिव्या, इज दिस ओके? Yuvraj, you're very nice. Shreyanshi, on 12 JEE, few months, my score is bad. नहीं, टीचर्स को चिल्लाना नहीं चाहिए किसी पे यार. एवरीबडी इज ट्राइंग देयर बेस्ट, आई अंडरस्टैंड. सो यू गाइस कीप ट्राइंग यार. एंड टीचर्स ऑल्सो हैव देयर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ ना. तो आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बट आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो. वट एवर यू कैन डू, यू प्लीज ट्राई. ठीक है. आई नो जेई जैसे ज्यादा पास आता रहता है, लोगों की टेंशन बढ़ती जाती है, लोगों के पारे बढ़ते जाते हैं. इट हैपेंस, राइट. So the units of this is the equation, but higher KH matlab more soluble. Also x axis more fraction of solvent. Matlab now the expression changes to KH into 1 minus x. ठीक है. So this is what you're plotting. This is the graph. Divya, I hope this helps. Shreyanshi, Divya, everybody else इनको थोड़ी मुश्किल हो रही थी. And Viru, absolutely you can go. Thank you so much for joining in. Is this okay, Yash? Everybody else who said D? You're most welcome. You take care as well, Viru. Ping me or I teach Chem if you want. I'll try and help you out, dude. Yeah. This is on Telegram and Discord. Yeah. Okay. आगे बढ़ा जाए. Can we move on? Yeah. Shreyanshi, is this okay? Yash. Everybody else जिसको थोड़ी मुश्किल हो रही थी. Divya. Yeah. Oh, Divya gave the right answer. Good stuff. Krish. ठीक है? Okay. Yes. And if you still find it difficult, ping me on Telegram. I'll tell you. I can help you out. I can leave voice notes or whatever. I do that for students. I'm not being formal. Seriously, kar lo. An aqueous solution is 1 molar in Ki. Which change will cause the vapor pressure of the solution to decrease? Okay, ध्यान से पढ़ो. It could be more than one correct. Could be more than one correct. Try this out. An aqueous solution is 1 molar in Ki. Which change will cause the vapor pressure of the solution to decrease? Seems like a very straightforward question, but please read it carefully and get this out of the way. Take care, man, Viru. Nitish, can you please try this question out? Divya, if you're still around, Shreyanshi, Yuvraj, or Rek to kar rahi hai, I know. Shreyanshi, okay, great. Krish, Shivam asked me a question which I missed out. मिलती तो है, but पता नहीं कौन सी मिलती है. You have to figure that out, dude. That will be a separate session, Shivam. If you're talking about ranks and stuff, वो हम लोग करेंगे. एक बार जेई मेन होने दो, then we'll do all those sessions of rank में क्या मिलता है. अभी तो फोकस करो एग्जाम देने पे. Just scrolling up to see if I missed anything. Ki means what? Ki is potassium iodide, Shreyanshi. Capital I है. Potassium iodide, जैसे कि NaI, right? You have NaI, उसका similar thing is Ki. Excuse me. In fact, Ki is used in salt analysis. Potassium iodide, right? Check this out. I've done salt analysis in detail, and Ki के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात की है वहां पे. In the sense, its reactions. Ki के बारे में specifically yellowish color होता है, etc. You add Ki with this thing, it forms AgI. You confirm that Ag मतलब iodide ions present in all salt analysis. Salt analysis बार JEE में लगता है सवाल आएंगे for sure. Because in both NTA for NEET and JEE have clearly said कि भाई salt analysis पढ़ के आना. So if you are waiting for that, please check out those sessions. वहाँ पे salt analysis देखिए. A, B, Shreyanshi says A and B. Okay. Why not C? If A, B है तो C क्यों नहीं Shreyanshi जी? देखो NaCl and Ki are same, no? NaCl का भी I is 2. इसका भी I is 2. इसका I is क्या बोलते हैं, इसका 3 हो जाएगा.
एडिशन ऑफ वाटर में मतलब डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट करने से क्या होगा? मोलैलिटी कम हो जाएगी। अगर मोलैलिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा? दैट इज व्हाट यू हैव टू फिगर आउट। या सी नदीम, इट कैन बी मोर देन वन करेक्ट। तो द आंसर इज ईदर ए बी सी और डी, ईदर ए बी सी और डी। विच वन इज इट? हम लोग जो है वेपर प्रेशर को कम करना चाहते हैं। पानी ज्यादा ऐड करने से मोलैलिटी कम हो जाएगी तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। मोलैलिटी कम हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन भी कम हो जाएगा, राइट? व्हाट इज द एक्सप्रेशन? देखो, इफ यू ऐड इलेक्ट्रोलाइट, वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है? ज्यादा आयन होते हैं और कम हो जाता है। और एडिंग वाटर, इफ यू डू दिस एक्सप्रेशन डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स, एंड मैं ये बार बार अब लिखूंगा बिकॉज मुझे अभी पता चल रहा है कि आप लोगों को इस पॉइंट में सम स्टूडेंट्स हैव अ डाउट कि व्हाट इज दिस एक्स। एक्स इज ऑफ सोल्यूट नॉट सॉल्वेंट, ठीक है? इधर अगर मैं पानी ऐड करूंगा तो मोलैलिटी तो कम होगी, एक्स ऑफ सोल्यूट भी कम होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। नो, if I have 1 by 1 plus 1, or I have 1 by 1 plus 2, or I have 1 by 1 plus 3. Now in all these three cases, I'm increasing solvent. Solvent के मोल्स में बदल रहा हूं, राइट? सो क्लियरली मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है। मतलब कि मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है मतलब डेल्टा पी कम हो रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। इसलिए दिस इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर। आंसर ए, बी एंड सी। यस श्रेयांशी, एक्सेलेंट वर्क। रेक डी युवराज, कंफ्यूज आ गए क्या शब्दों से? दिस व्हाट जे इज अबाउट। जस्ट बेसिक थियोरी थिंग्स बट जस्ट आस्क्ड इन अ वे जहां पे लगता है ये क्या हो गया भाई। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, पानी ऐड करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, राइट? देखो इसमें ऑलरेडी एक किया है, इट ऑलरेडी हैज किया है। अगर इट वॉज प्योर वाटर और प्योर वाटर में और पानी डालते तब कोई फर्क नहीं होता, बट ऑलरेडी हैज किया है मतलब उसमें कुछ सोल्यूट है। Now, if I dilute it, I am reducing molality, I am reducing mole fraction. By reducing molality, by reducing mole fraction, I am increasing the vapor pressure. Do you see that? युवराज कैसे बताओ? श्रेयांशी, excellent work. Yay! I'm with you on that. Yuvraj and Rek, since you guys are saying D, I want to understand कि why do you think it is D? It's okay if you think it's D. And हो सकता है मैंने भी उल्टा बोल दिया हो, कभी हो जाता है गलती। Shreyanshi, Ki also is non-volatile, na? It's a solid, right? So it's non-volatile. युवराज इसीलिए 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 मैं बार बार बोलता हूं कि it's possible you have seen these questions somewhere and you also solved them somewhere. But life is not that easy. I will obviously change it. Yes, डी डालने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, बट सवाल तो देखो, सॉल्यूशन तो डिक्रीज होना है। आई चेंज वन वर्ड इन द क्वेश्चन, यू आर एब्सोल्युटली राइट युवराज। सवाल था इंक्रीज, मैंने कर दिया डिक्रीज। उससे नीट का सवाल हो गया जेईई एडवांस का सवाल। कैसे? उसमें था एक करेक्ट, इसमें 3 करेक्ट। या एग्जैक्टली, दैट्स ऑल गाइस। थैंक्स फॉर रीडिंग सो मच इनटू इट, बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। मुझे भी मजा आता है सब करने में। आई लाइक मेकिंग क्वेश्चंस, इट्स अ फन थिंग टू डू। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस जॉब, मेकिंग ऑसम क्वेश्चंस। दैट बारीकी को जो करता है। श्रेयांशी, एक्सेलेंट वर्क श्रेयांशी ऑन गेटिंग दिस राइट। अगला सवाल करें, एक दो सवाल ही बाकी हैं। यू हैव अनदर सेशन एट 1, आई नो, आई लेट यू गो वेरी क्विकली। एक ये है और इसके बाद एक जेईई एडवांस का सवाल है एंड वी आर डन। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं इसको। AB2 is 10% dissociated in water and gives you A2 plus and B minus. The boiling point of 5 molar aqueous solution of AB2 is what? Boiling point निकालना है, ध्यान से करो, ध्यान से करो। ये भी सवाल अगर तुमने देखा हुआ है जल्दी से आंसर मत देना। ये नीट वालों ने भी यही किया था, देखा और तुरंत आंसर बताया, सबका गलत हुआ। बिकॉज दिस व्हाट, हमने सवाल देख लिया। बिकॉज देखो गाइस, ऐसा होना ना कि तुमने जो सवाल देखा वही जेईई या फिर नीट में आएगा, बहुत कम चांसेस है। स्टेट एग्जाम में हो सकता है, जेईई नीट में ऐसा नहीं होगा, कुछ तो बदलाव होगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, गॉड इज इन द डिटेल्स। ध्यान से करो। आई एम गोना गो एंड टर्न ऑन थोड़ा सा वेंटिलेशन, बहुत गर्मी हो रही है। माय वीडियो विल बी ऑफ फॉर अ कपल ऑफ लाइक 10-15 सेकंड्स, बट तब तक आप सॉल्व करो इसको।
मैन बैंगलोर सपोज टू बी कोल्ड बट बहुत गर्मी हो रही है सडनली. ट्राई करें इस सवाल को. देखो, द मेन थिंग टू डू हियर इज टू राइट डाउन दिस इक्वेशन. थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं आपको. ये इक्वेशन के बाद फिगर आउट आई. एंड प्लीज एक विनती है आपसे, प्लीज डोंट राइट सम रैंडम इक्वेशन और उससे निकालो. व्हाट इज आई? आई इज पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय इनिशियल पार्टिकल्स. बस वो अल्फा एन ये सब छोड़ दो प्लीज. आई बेग यू, डोंट मक दैट इक्वेशन. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ योर एनर्जी. बिल्कुल जरूरत नहीं है. इससे करो. Chennai, what? Okay, Abhinandan, I don't know what you're talking about. I hope everything is okay wherever you're at. Since I'm asking you to do it in a particular way, लिख लो ऐसा ही, right? Equilibrium वाला expression लिख लो. इतना dissociated है, then I write this down. So I got total moles. So I is simply going to be equal to this, right? I की वैल्यू होगी ये. अब इससे करके देखो, अब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया. I is 21, I is 1.2 ना श्रेयांशी. डिसोसिएशन सही है. ऑप्शन डी युवराज, दिव्या, आई लव इट. सही है. इतनी जल्दी आंसर देते हो. सही है. यस, आई इज 1.2. गुड जॉब श्रेयांशी. समझ में आया आई कैसे है 1.2? 1 माइनस अल्फा, अल्फा 2 अल्फा. हाउ डू यू चेक दिस? ये सही लिखा कि नहीं लिखा? अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 1. अल्फा इक्वल टू 0 पे ये होना चाहिए 0, सॉरी ये होना चाहिए 1, 0 एंड 0. अल्फा इक्वल टू 1 तो होना पे 0, 1 एंड 2. और देखो, यस दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, राइट? चेक द एक्सट्रीम कंडीशंस. अगर तुमने जो लिखा है वो सही है कि नहीं, एक्सट्रीम कंडीशंस चेक कर देखो. अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल 1, मतलब व्हेन द रिएक्शन डज नॉट स्टार्ट, व्हेन द रिएक्शन गोस टू कंप्लीशन. दोनों में देखो. उसके बाद तो डायरेक्ट है. डेल्टा टीबी सिंपली आई टाइम्स केबी टाइम्स एम. 1.2 into 0.5 into 5, which is simply 3, right? 103 degrees Celsius. Excellent work. No, Shreyanshi, I don't like that formula. But sure, हो सकता है उससे भी मिल जाए. हो सकता है उससे भी मिल जाए श्रेयांशी. But I don't like that formula because I don't care for it. देखो मैंने उस बिना उस फॉर्मूला कर लिया. And maybe I'm coming on too strong with this, right? I'm not disrespecting anybody who uses a formula. मैं बस बोल रहा हूं जरूरत नहीं है. There is an easier way जिसपे दिमाग पे कम स्ट्रेस बने to do it. And मेरा हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेने का होता है. जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना, takes the path of least resistance. That's my goal too for you. ताकि आपको कोई टेंशन ना हो, so that you're able to figure things out आसानी से. Which is why I said इस तरीके से करो. Okay, I start off with 1 mole of AB2, so I is simply this divided by 1. खत्म हो गया यहाँ पे, है ना? वो जो आप बोल रही हैं, I don't know that formula. I'm being very honest with you. मुझे फॉर्मूला मालूम ही नहीं है. फेस कैम इज ब्लरी. ठीक है दोस्त, अभी कर देते हैं फिक्स. डीएक्टिवेट, एक्टिवेट. Yes, I have to get that fixed. मैंने आज सुबह उनको बोला भाई कैमरा रखी हुई, लाइट लगा दो यार लोगों. There's a very fancy camera sitting here. I wish I could show you right next to my webcam that I'm using for this. But I can't use that fancy camera because that requires fancy lights. And the fancy lights, yeah, I know, first world problems. Last सवाल आज का. Last सवाल आज का. We'll do this one quicker than the others. थोड़ा लंबा लिखा है यहाँ पे. Let me cut it down into something short. Right? ये assume घटा देते हैं. इसको रहने दो. Boiling point of water, 0.1 molal सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज X. इसमें हम लोग इक्वल ऐड कर रहे हैं 0.1 मोलाल BaCl2 टू मेक अ न्यू सॉल्यूशन B. द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर इन टू सॉल्यूशंस इज Y. हमको निकालनी है Y की वैल्यू. ठीक है. फैंसी लाइट मतलब कुछ गोडॉक्स है. राइट नाउ आई एम यूजिंग दोस इन्फ्लुएंसर लाइट्स, यू नो, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल दोस रिंग लाइट्स. बट वो स्टूडियो वाली फैंसी लाइट्स लेके आएंगे बोल रहे हैं. अभी देखते हैं कब लेंगे. देखो शॉर्ट में मैंने लिख दिया है थिन स्लाइस करके. बॉइलिंग पॉइंट वाटर इन 0.1 मोलार सिल्वर नाइट्रेट इज समथिंग. इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलार बेरियम क्लोराइड इज एडेड टू मेक B. द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर इन द टू सॉल्यूशंस इज व्हाट. मतलब एक में कुछ होगा डेल्टा टीबी, दूसरे में डेल्टा टीबी थोड़ा और जो है बढ़ जाएगा, राइट? बिकॉज मैंने दोनों में ऐड किया है. आई हैव एडेड मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नहीं बढ़ जाएगा कम होगा मालूम नहीं एक्चुअली. We'll have to see. I can't say बढ़ जाएगा कम हो जाएगा. We'll see. नहीं श्रेयांशी कर लेंगे. बहुत सिंपल है.
just to give Shreyanshi confidence, I'm going to solve this slowly, right? Everybody else, तुम लोग try करो. अगर Rek, Yuvraj, you want to try, you try. For other folks who are like, यार ये बहुत मुश्किल है, don't worry. I'm here. I'll do this one step at a time, right? How do you do this question? पहली बात तो simple है. Delta TB of A is directly 0.1, okay? Because यहाँ पे दिया हुआ है. Where is it given? Yeah, 0.5. एक second. Let me read this up quickly, huh? 0.1 in blah 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 blah. Densities of AB is same as water. Salt dissociates completely. Use KB equal to 0.5. 0.1 into KB होगा. My bad. This is going to be 0.1 into KB, right? Because 0.1 is molality and this is KB. But there is also an I over here. So can we say this directly? It's M into KB into I, right? Okay. ठीक है. Now, is it given anywhere कि इसका कुछ value है? Let me go back to that main question. Fancy big question. Boiling point of water in 0.1 molar silver nitrate solution is something. Is X. Okay. To this solution, an equal amount of 0.1 molar aqueous BaCl2 is added to make a new solution B. Difference in boiling point क्या होता है? Ebullioscopic constant यहाँ पे दिया हुआ है. Boiling point of pure water is 100. Okay. Cool. So, X delta TB. Let's just scratch this out and इसको फिर से यहाँ पे लिख देते हैं. Delta TB of A is equal to molality times KB times I. What is I इसका? AgNO3. Now AgNO3 का क्या होगा? AgNO3 का I is going to be 2, right? Let's just write that. But the moment I add BaCl2, look what happens. I की जरूरत नहीं है, complete dissociate. Rek, उसमें भी तो I की जरूरत होगी. Even if it completely dissociates, तब भी I की जरूरत होगी. Because I is total number of particles that is expected by that you have that by expected, right? तो Ag ने तो dissociate हो जाएगा. Human, I like it. Yes, Yuvraj. It is different, but what is even more annoying is ये भाई साहब दोनों react कर जाते हैं. देखो, BaCl2 and AgNO3 reacts. In fact, अगर आपने practical chemistry पढ़ी है, you know कि this is a test for chloride ions. Chloride ions का एक confirmatory test है. ये देखो, AgCl precipitate हो जाता है, सफेद precipitate देता है, ठीक है? And I'm adding 0.1 of both. Okay, I have assumed that molality, मतलब कि I have taken say 1 kilogram of solution. Okay, that's my basis. Solvent, sorry, not solution. 1 kilogram of solvent. So I know कि उसमें 0.1 mole दोनों के हैं. And after reaction, according to this stoichiometry, कुछ अजीब चीजें हो रही हैं, right? इसमें सिर्फ आधा ही react कर जाता है, आधा बच जाता है. ये पूरा react हो जाता है. So this is your limiting reagent. What this also means is कि at the end, you know, this is obviously what is happening, right? एक Ba, 2Cl, एक Ba, 2 nitrogen, nitrate ions, ये सब ठीक है. This is fine, right? BaNO3 whole twice. That's what this is saying. So after this whole reaction thing happens, अब क्या हो रहा है? Is this okay? ये पूरा consume हो रहा है, ये पूरा form हो रहा है. ये आधा consume हो रहा है, जितना ये consume है उतना ही ये form हो रहा है. Moles of ions कितने हैं? Moles of ions now is a little bit different. Why is it different? I have to add up both of these, right? And इसमें यहाँ पे तो कुछ नहीं है भाई. Do you see that? ये test है, white PPT. Yes, absolutely. Yeah, this is a precipitate, so I'm not going to count this. Yes or no? Why did I do this? Because इसका I is equal to 3. Why did I do this? Because इसका I is equal to 3. So 3 into 5 is 0.15. 3 into 0.05 is 0.15. Is this okay? Human saying molality is 0.3 by 2 into 0.015. Okay. Okay, cool. Delta TB is 0.015 into 0.5. Okay, cool. So दूसरे वाले का delta TB of B is going to be equal to this value right here, right? Moles of ions by mass of solvent in kilogram into kb, right? मैं पूरा में लिख रहा हूं. So delta TB क्या होगा? 0.015 into 2. ए ह्यूमन क्या हुआ? हटा दिया? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? देखो, I assume that you started with 1 kg of solvent and since you are taking the same amount तो उनको आप ऐड करो.
या यू ऐड देम बोथ टुगेदर सो यू गेट 2 kg, इसलिए डिनोमिनेटर हो गया 2. ठीक है, और क्या क्या लिखा है यहां पे, दिस इज I into moles. Okay, this is what this is. What is this? This is Kb. What is this? This is mass of solvent. ठीक है, तो ये है 0.075. एनडीए भाई साहब, दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली जेई एडवांस का है. पुराने वाले जो सवाल थे दे वर फ्रॉम जेई मेन. ठीक है, कूल. अरे भाई रेक युवराज, अब क्या करें, डेल्टा टी भी तो निकल गया, अब क्या करें. 0.1 into 2 into 0.5. This is how I got 0.1 degrees Celsius. What is 0.1? This is molality. What is 2? 2 is the I value for AgNO3. Okay, I for AgNO3. What is 0.5? This is Kb. ठीक है, दोनों का Kb सेम था. So now to just subtract, y is simply 0.1 minus 0.075, which is 2.5 and 10 power minus 2, which is the answer. Y and 10 power minus 2, answer is going to be 2.5. ठीक है? Yes, Yuvraj, absolutely. Yeah, that's great, NDA. बढ़िया है, lovely. Yeah, the interview stage of NDA is very fascinating. I know ये सेशन थोड़ा लंबा हो गया. I'm so sorry for this. मुझे लगा कि let's just push through it. आप लोग इतना टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं. I thought let's do solutions properly. If you want me to reduce the session duration back to 1 hour, or you want me to start earlier, let me know in the comments. But हम लोग आज करते हैं खत्म इस सेशन को. Thanks रेक युवराज. ए बी आंसर 2 होगा या 2.5? अब आंसर 2.5 होगा ना, इंटीजर नहीं देना यहाँ पे. देखो आजकल इंटीजर का कॉन्सेप्ट चला गया है. यू हैव टू पुट डेसिमल्स, राइट? इंटीजर नहीं बोला है. Did the question say integer? I don't think so. Let me go back and check. इसमें integer नहीं लिखा है, right? So 2.5 is the answer. Okay? Is it, Yuvraj? भाई ये JEE advanced का सवाल है, so it's okay. This is a JEE advanced PYQ, right? I thought you got to do 2 decimals. Maybe I'm a little confused between JEE main and advanced. I thought कि 2 decimal तक करना होता था. Yeah, तो 2.50 is what you would put in. Yeah. Yeah, for me, JEE Advanced is the exam. JEE Main is also something I'm doing, but मेरा focus वही था. But sure, I will check out. It's important to know what is happening in JEE Advanced. Right? अगर वहाँ पे सिर्फ integer बोलते हैं, I'll let you know next time जब मैं करूँगा. ठीक है, हो गया आज का सेशन complete. Thank you so much for being so patient and sitting around for such a long session. I hope you guys take a small break and then go on to the next one. Thank you. हम लोग मिलते हैं सैटरडे को and we will do क्या करेंगे? Kinetics करेंगे? नहीं. Periodic table, chill है. Periodic table करते हैं, है ना? अगला क्या है? Periodic table करते हैं. Let me quickly go and show you what we are doing next. Here you go. And if you want a list of everything that I'm doing, that's on this side right here. It's okay, Rek? It's okay. कोई टेंशन नहीं है. अगला है, अच्छा अगला kinetics है. माफ करना. On Saturday is kinetics. अरे हरा पे हरा नहीं दिखेगा ना. Saturday is kinetics and then next Tuesday is periodic table. फिर electro bonding etc etc. Bonding में मुझे बहुत मजा आता है. चलो, see you all. Bye. Good afternoon. Thank you so much for sitting around. Yeah. Bye. Please share this session with your friends if you liked it and subscribe if you haven't already. Tata. Bye. Oh, युवराज को होमवर्क सवाल चाहिए. रुको. Hold on. How about this one? Okay, here you go. Homework. Since युवराज ने मांगा, हम देते हैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन. ओके, सिंपल ही है बट कर लेना. ठीक है, ओके, बाय. थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय, टाटा.